Appointment of governor. Article 153 of the Constitution creates the office of the governor. It says that there shall be governor for each state. There shall be governor for each state, but nothing in this article shall prevent the appointment of same person as governor for two or more states. Nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as governor for two or more states. The governor of a state shall be appointed by president by warrant under his seal and in his hand and seal. Article 155. No person shall be eligible for appointment as governor unless he is citizen of India and has completed the age of 35 years. As per Article 357, the governor shall hold office during the pleasure of the president. The governor may by writing under his hand address to the president resign his office subject to the above provision of his article. Above provision of this article. The governor shall hold office for a period of 5 years from the date on which he enters upon his office. But notwithstanding the expiration of his term, a governor shall continue to hold office until his successor enters upon his office. Article 156. गवर्नर एक राज्य का उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है shall be appointed by president. How he will appoint the president? How will appoint the governor of a state? By warrant under his hand and seal under Article 155. No person shall be eligible for appointment as governor unless he shall be a citizen of India. He shall complete the age of 35 years as per Article 157. Governor shall hold office during the pleasure of the president. Governor may by writing under his hand address to the president resign his office. Subject to the above provision of this article, a governor shall hold office for a period of 5 years from the date on which he enters his office. But notwithstanding the expiration of his term, a governor shall continue to hold office until his successor enters upon his office. Article 156. Condition of governor's office. The governor shall not be a member of either House of Parliament or legislature of any state. If any such member is appointed as governor, his seat as such member shall be deemed to have been vacated on the date on which he enters upon his office as governor. The governor shall not hold any other office of profit. He shall be entitled without payment of any rent to the user of his official residence. He shall also be entitled to such emoluments, allowances, and privileges as may be determined by Parliament by law until provision in that behalf. If so made, such emoluments, allowances, and privileges as are specified in the second schedule of the Constitution. The governor at present get a salary of rupees 1,10,000 per month. Governor's salary 1,10,000. The emolument and allowances of the governor shall not be diminished during his term of office. As per Article 158, every governor shall before entering upon his office make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court or in his absence the senior most judge of the court available an oath or affirmation in the form prescribed in Article 159 of the Constitution. जो आर्टिकल 153 है संविधान का, वो एक ऑफिस बनाता है गवर्नर का. वो बोलता है कि एक गवर्नर होएगा, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट. हर एक राज्य का एक गवर्नर होगा, लेकिन एक गवर्नर दो या दो से ज़्यादा राज्य का गवर्नर भी हो सकता है. गवर्नर एक राज्य का उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, अपने हाथ में उसका पास वारंट होगा और सील होगा. आर्टिकल 155 बताता है कोई भी पर्सन जो है वो गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा अगर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है. नहीं, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना पड़ेगा गवर्नर अपॉइंट करने के लिए, और उसने 35 साल की आयु कंप्लीट कर लिया. आर्टिकल 157. गवर्नर होल्ड करेगा ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर पे. गवर्नर जो है वो अपने राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिज़ाइन हिज ऑफिस. गवर्नर जो है वो अपने हाथ में लिखित रूप में जो प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए ऑफिस से रिज़ाइन करेगा. सब्जेक्ट टू द अबव प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, ए गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. गवर्नर जो है वो 5 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करता है जिस डेट से वो ऑफिस में एंट्री लिया. लेकिन गवर्नर जो है वो ऑफिस को कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि उसका सबसे सक्सेसर ऑफिस में ना आ जाए. आर्टिकल 156 ये बताता है.
गवर्नर जो है वो मेंबर नहीं होगा किसी भी हाउस, पार्लियामेंट का किसी भी हाउस का, या लेजिस्लेटर किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होगा। अगर ऐसा मेंबर अपॉइंट हो गया है गवर्नर के तौर पर, तो उसका सीट जो है ऐसे मेंबर के तौर पर वो मान ली जाएगा खाली कर दिया जिस डेट में वो गवर्नर की पोस्ट पे घुस गया है। गवर्नर जो है वो किसी भी तरह अदर दूसरे तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। गवर्नर जो है किसी भी दूसरे तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। उसको अधिकार होएगा बिना किसी रेंट के, पेमेंट के, अपना ऑफिशियल रेसिडेंस को यूज़ करने का। अब उसके अधिकारों का उतना एमोल्डमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेज मिलेगा जो पार्लियामेंट लॉ से डिटरमाइन करता है। ठीक है। अगर प्रोविज़न इस बिहाफ में नहीं बना है तो जो थर्ड शेड्यूल में बताया गया है, सेकंड शेड्यूल में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से अमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस मिलेंगे। गवर्नर अभी के टाइम पर उसको 1,10,000 का सैलरी मिलता है और एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस मिलता है गवर्नर का, वो कम नहीं किया जा सकता है ऑफिस के टर्म के दौरान। आर्टिकल 158। हर एक गवर्नर जो है वो ऑफिस में एंटर करने से पहले वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ प्रेजेंस में सब्सक्राइब करेगा, और सीनियर मोस्ट जज जो है कोर्ट का जो अवेलेबल है, अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट के सामने सब्सक्राइब करेगा अपने ऑफिस को ओथ और एफर्मेशन लेके 159 के हिसाब से, आर्टिकल 159 के हिसाब से। पावर ऑफ पोजीशन क्या है गवर्नर का स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? जो हेड है स्टेट का उसको गवर्नर कहते हैं। उसका पावर और उसका वो प्रेसिडेंट के जैसा ही है, कुछ इम्पोर्टेंट अंतर है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड टू हिज ऑफिस वाइल गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है अपने ऑफिस में और गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब वो होल्ड करते हैं प्लेजर के दौरान, प्रेसिडेंट के प्लेजर के दौरान, और उसे डिसमिस कर दिया जा सकता है ऑफिस से। जो पावर है गवर्नर का उसको 4 हेड में क्लासीफाई किया जाता है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट का वो गवर्नर को दिया गया है, वो खुद एक्सरसाइज करेगा डायरेक्टली या ऑफिसर्स जो सबॉर्डिनेट है उसके द्वारा। आर्टिकल 154 में बताया गया है जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं वो उसके नाम पे करे जाएंगे। एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट का वो एक्सटेंड होएगा उन मैटर्स में जिसमें कि स्टेट का लॉ बनाने का पावर है, लॉ बनाने के लिए। किसी भी मैटर में जिसके रिस्पेक्ट में स्टेट के लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के रिस्पेक्ट में लॉ बनाने का पावर रहेगा। इन एनी मैटर विथ रेस्पेक्ट टू विच बोथ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक लॉज, दैट इज if it is a matter mentioned in the concurrent list, the executive power of the state shall be subject to and limited by executive power conferred by the constitution or by any law made by parliament upon the union or authorities thereof. Article 162। गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, दूसरे मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। गवर्नर अपॉइंट्स द सीएम एंड अदर मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ सीएम। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। मिनिस्टर जो है ऑफिस होल्ड करता है गवर्नर के प्लेजर पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हाउएवर रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर और टू द लोअर हाउस ऑफ सच लेजिस्लेचर where the legislature consists of 2 chambers. This means that so long the ministers enjoy the confidence of the legislature, they cannot be dismissed by governor. This makes the governor a constitutional head like the President of India. Number 2, legislative power. The governor is part and parcel of legislature of a state, which consists of the governor and the house or houses of legislature as the case may be. Article 168. Governor nominates 1/6 of the total number of the members of the upper house of legislative council. Where such council exists, the governor makes nomination of person having special knowledge or experience in literature, science, art, cooperative movement, and social service. Article 171. He may nominate 2 members of the Anglo-Indian community for a period of 10 years from the commencement of the constitution, if he is of opinion that the community is not adequately represented in the state assembly. Article 333. The governor summons, prorogue the houses of the legislature and dissolve the legislative assembly. Article 174.
He addresses the House of the Legislature, Article 175-176. He gives assent to bills without which no bill can become law, Article 200. He sends messages to the legislature, Article 176. Governor is uh, empowered to make rules for the more convenient transaction of the business of the government of a state and for the allocation among minister of the state business insofar it is not business with respect to which the governor is by the constitution or under the constitution with respect to the to act in his discretion, Article 166. He appoints the Advocate General of the State, Article 165, the Chairman and Member of the State Public Service Commission, Article 316, the Judge of Subordinate Judiciary in consultation with State High Court, Article 283-284. Governor is empowered to make rules for the more convenient transaction of business of the government of the state and for allocation among ministers of the state business insofar it is not business with respect to which the governor is by the constitution or under the constitution required to act in his discretion, Article 166. He appoints the Advocate General of the state, Article 165, the Chairman and Member of the State Public Service Commission, Article 316, and the Judge of Subordinate Judiciary in consultation with the State High Court, Article 283-284.